Good morning, everyone. Students, today we will discuss chapter number 5, Rights, from the book Political Theory of class 11th. And today we will discuss mainly the importance of rights and the relationship between the rights and the duties. In the previous video, I told you that every citizen has some fundamental rights, legal rights, and cultural and civil rights, and what are rights and where they come from. So let's start with again the meaning of the rights for the revision. Student, what are rights? A right, I can say, it is a claim of independence of a person to do any work he gets it in a society, and the demand for such facilities is called a right. It means rights are necessary to the individual because man can develop all his mental, physical, spiritual qualities only if he is given certain rights and the privileges by the state. And as we know that each state gives certain rights to the citizen which are essential for the development, or I can say the personality of the individual. So this is the right. A right is a claim recognized by the society and enforced by the state. So now the importance of right. Why a person needs right? What are the value of the right? What are the importance of the needs of the right? First, bache, rights are necessary for the betterment of an individual. As I told you that rights are necessary for the development, for the personality of the individual. In the absence of rights, an individual can't think to develop himself or herself. हम कैसे develop करेंगे खुद को बिना rights के? So, rights are the condition that help in the development of one personality. Rights motivate the individual to develop their potential to the fullest extent, and they give individual full opportunity for the development and progress. All the 4 points are interlinked. कहीं ना कहीं बच्चे हम राइट्स के थ्रू जो है एक पर्सन की डेवलपमेंट कर रहे हैं टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, मतलब जितना वो कर सकते हैं. एंड is somewhere it motivates the individual. So rights, I can say, are necessary condition that is helpful for the one's personality. Then forms and the types or the kinds of rights. The first one is natural rights. I told you that mainly we have discussed 3 rights: fundamental rights, civil rights, and political right. But apart from this, we have the natural rights also. Natural right means like right to property. Right to property is a natural right. Those rights which are given by the nature to us. For after the death of father, automatically the honor, or I can say जो claim करने वाले होते हैं वो right to property में son क्या daughter का ही होता है. तो this is the natural right. Then the next one is moral rights. The rights which are based on the ethical rules prevailing among the people. Similarly, the legal rights are right that is recognized by the power or by the that is enforced by the power of state. Legal means under the law. And student, I told you in the previous video that only to have the information regarding the right is not enough. You should have the knowledge about the article, especially about the fundamental rights, because the fundamental rights are those which are mentioned in the constitution. And article 12, article 13, 14, 15 to article 35 all are under the fundamental rights. मतलब वो सारे हमारे fundamental right इनके अंडर कवर हो रहे हैं. और मैंने आपको बता भी दिया था ऑनलाइन क्लासेस में कि कौन कौन से आर्टिकल जो है राइट टू इक्वालिटी का है, देन राइट टू फ्रीडम का है, देन सिविल राइट्स भी हमने डिस्कस किए थे. द राइट्स विच अनेबल एन इंडिविजुअल टू लीड अ डिसेंट सिविल लाइफ, लाइक राइट टू टेक द फ्रेश एयर, राइट टू मेंटेन द इन्वायरमेंट, ये हमारे सिविल राइट्स हैं. पॉलिटिकल राइट्स हमने पढ़े थे. पॉलिटिकल राइट मीन्स विच आर रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स. राइट टू वोट हो गया, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, राइट टू चूज गवर्नमेंट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ऑल कम्स अंडर द पॉलिटिकल राइट्स. Then economic rights, we have the economic rights also which are essential for the economic development of the individual. हमारे पास जैसे सोशल इकोनॉमिक राइट्स के अगर मैं एग्जांपल लूँ, राइट टू वेजेस, एडुकेट वेजेस मैं कहूँगी कि
जितना हमें वेजेस बनता है उतना हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये हमारा देखो सोशल राइट भी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉइंट से भी हमारा राइट है कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें इतना तो पैसा दीजिए. देन स्टूडेंट हेयर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, कुछ मैंने बताया और कुछ आप सोचेंगे. दैट्स लाइक राइट टू प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट, सो राइट टू लाइफ इज डैश, इट मीन्स कौन सा राइट है. सिमिलरली राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड देन राइट टू फ्रीडम इन द डोमेस्टिक अफेयर्स एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. ये कौन से राइट्स हैं? पॉलिटिकल राइट्स, नेचुरल राइट्स, मोरल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स. Then student, the next topic is the relationship between the rights and the duties. Rights or duties, I can say, they are the two sides of a same coin. It means they are two aspects of the same thing. If one look at that from the one's own standpoint, they are the rights, and if one look at them from the other standpoint, it means standpoint of other, they are the duties. And student, rights and the duties are inseparable, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता. I am saying that our constitution is giving the fundamental right to us, so fundamental duties, 11 fundamental duties, they have also mentioned in the same constitution. It means if I have the right to enjoy my fundamental rights and all the rights, if I can be a claimant, so it is my duty, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नेशन के लिए या अपने कल्चर के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ. So here it is, the first point is one's right is the another's duty. It means a right that belonging to one person imposes a corresponding duty on the others to respect his rights. मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ लाइक राइट टू प्रॉपर्टी का, एंड इंडिविजुअल का राइट है, नेचुरल राइट है हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी. सो बच्चे, इट इज़ द ड्यूटी of other na, that not to take away, not to steal his property without my consent or without any interfere. So अगर मेरे पास वंस राइट इज़ द अनदर्स ड्यूटी, मेरे पास मेरा राइट है नेचुरल राइट कि मेरे फादर की डेथ के बाद या जैसे भी मैं उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ. दिस इज़ माई राइट, बट द सेम थिंग इज़ अनदर्स ड्यूटी. और दूसरों की भी ड्यूटी है कि वो मेरी प्रॉपर्टी पे नज़र ना रखें या उस पर कब्जा ना करें, उसको कन्फिस्टिकेट ना करें. सो दिस इज़ द वंस राइट इज़ द अनदर्स ड्यूटी. It, and then second one is one's right is one's duty also. It means बच्चे a right is at the same time a duty. If an individual enjoy a right, it must be remembered that the same right belongs to the other individual. यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं दो पर्सन का. सपोज A has a right to express his opinion freely. A जो है उसके पास अपने ओपिनियन बिल्कुल एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी है. And now it is also his duty not to deny the same right to be. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे पास ही है, वो सबके पास होनी चाहिए. Then this right imply one more duty also. Suppose if I am enjoying the liberty of speech, it is my duty not to misuse this right by preaching anything that is against the law, that disturb peace and harmony, and that spread hatred among the different communities. So one's right in one's duty also. अगर मेरे right है मेरे पास कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी भी है कि कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं जिसकी वजह से कहीं झगड़ा हो जाए या कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए. ओके, देन one's right is one's duty to use it in a right way. Student, it is the duty of the individual to make proper use of his rights. Of course हमें इतने rights मिले हुए हैं, स्पेशली फंडामेंटल राइट, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इसे ढंग से यूज़ करें. The improper use of right prove harmful for the other, and the society, I think, can never tolerate this. If an individual is given the freedom of speech and expression, he shouldn't misuse this right by spreading hatred among the different community, जैसा हमने डिस्कस किया. तो बच्चे, एक का जो राइट है, वंस राइट इज़ वन ड्यूटी टू यूज़ इट इन अ राइट वे. हमें जो है अपने जो राइट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करने, हम उनको मिसयूज़ नहीं कर सकते. एवरी सिटीजन शुड यूज़ हिज राइट इन सच अ वे दैट interest of the community are promoted to the fullest. Then the next one is
one's right is a one's duty to use it for the social good. But a right is not only the mean for furthering self-interest, but through the rights we can think about the society also. It means the development, the general interest I'm talking about of the society. An individual enjoy rights only so long as he contributes his best instructed judgment to the common good of the people. It means स्टूडेंट सपोज एक इंडिविजुअल जो है अपने राइट्स को मिसयूज़ कर रहा है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एक कम्युनिटी के लिए या एक सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं, तो बच्चे वंस राइट इज़ वंस ड्यूटी टू यूज़ इट फॉर द सोशल गुड. हमारा राइट भी है कि हम अपने राइट्स को प्रॉपरली यूज़ कर सकें, लेकिन हमारी ड्यूटी भी है. देन सपोज एक एग्जांपल लूँ, अगर रिलीजन बेस पे लेती हूँ मैं एग्जांपल, वंस राइट इज़ वंस ड्यूटी टू यूज़ इट फॉर अ सोशल गुड. कई बार हम देखते हैं कि रिलीजन बेसिस पे बहुत झगड़े हो जाते हैं सोसाइटी में लेकर. तो बच्चे हमें अपने जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सेकुलरिज्म है, उसको इस तरह से प्रमोट करना है कि किसी और का भी जो सोसाइटी में रहते हुए, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन है, तो उनको उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए. It means every individual should his right to freedom of speech या freedom to follow any religion for the constructive purpose, for the society good, जिससे society जो है better हो. Then duties toward the state also. Duty toward the state means I can say the rights of the individual. इट इम्प्लाइज सर्टन ड्यूटी टुवर्ड द स्टेट. और यहाँ मैं स्टेट राजस्थान पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ, आपको भी पता है एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट स्टेट का मीनिंग. स्टेट मीन्स अ पर्टिकुलर लॉ. इट मीन्स पूरी कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ. द स्टेट गिव अस राइट, दे आर ऑल्सो सेफ गार्डेड बाय द स्टेट. It creates such an atmosphere that is necessary for making full use of the rights, and we know that rights are meaningless without the state. So it is the duty of every individual to respect the law of the state. Every individual should pay the state taxes honestly. Everyone should follow the rules regulation that is described in the constitution. States which is protecting the life, the property of the individual. So state हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहा. So हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी जो स्टेट है उसकी डिग्निटी को, उसको एक प्रोटेक्शन दे सकें. So I hope student this topic is clear to you. If you have any doubt regarding this topic, the rights, importance of rights, and the relationship between rights and duties, I know थोड़ा सा ये मिक्स हो रहा है that one's right is another duty, one's right is one duty also. बट बच्चे आपको एक एक पॉइंट अगर क्लियर होगा तो आप थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे. इवन आपको होमवर्क में मैंने डिटेल में लिखने के लिए बोला है. ये सिर्फ जब ये नोट्स लिखेंगे आप फेयर नोटबुक में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 5 पॉइंट है, आपको एक्सप्लेनेशन खुद लिखनी है इसकी. इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट, यू कैन कॉल मी. थैंक यू.